डर लग रहा है। Assalamu alaikum everyone. We are here. वालेकुम Uh, अस्सलाम। Assalamu alaikum शाइस्ता, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैं सानिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? आप कैसी हैं? I'm good, alhamdulillah. And viewers, we are live now अल्हम्दुलिल्लाह। with you, and we have a very interesting topic. We have a very nice guest with us, Miss Shaista Siddiqui. I would like to ask her to introduce herself. मैं क्या कहूँ उनके लिए, वो खुद बयान करें अपने बारे में। जी। बहुत शुक्रिया मिस सानिया, इतना तो कुछ भी नहीं है मेरे पास अपने बारे में कहने के लिए। यस, बट बेसिकली आई एम आई Montessorian, and then I started working in a well-known Montessori. After working about 10-12 years, I left from there and then started my own Montessori for 5 years. And then I got fed up and did a lot of graphic courses, and then again I switched my field and went back to my profession, teaching. And then I started working for Beacon House. मैंने Beacon House में काम किया कुछ ऐसा, उसके बाद फिर 5-7 साल काम करने के बाद then I moved to UAE. मैं वहाँ चली गई, फिर 10-15 साल वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स में जॉब करने के बाद मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं, और फिर वापस आई और फिर यहाँ पर एक अगेन वही काम फिर शुरू कर दिया। अब मैं टीचिंग से एफिलिएटेड तो भी हूँ, बट आई एम नॉट टीचिंग यंग चिल्ड्रन anymore, but I am doing workshops for the teachers. अब मैं सिखाने की पोजीशन में आ गई हूँ, उम्र भी काफी हो गई है, तो अब लोगों को सिखाते हैं कि भाई आप कैसे पढ़ाइए, कैसे पढ़ाया जाता है, ये सीख लीजिए। इसलिए कि मेरा ख्याल है आजकल जब यंग जनरेशन जो हमारी आ रही है, वो सब कुछ जल्दी-जल्दी चाहती है, जिसको कहीं वो कहते हैं ना, जब कहीं जॉब नहीं मिल रही तो चलो टीचिंग कर लेते हैं। तो बस टीचिंग कर लें, लेकिन नहीं, थोड़ा-सा ऐसा नहीं सीखें। है। आप माशाल्लाह अभी भी बहुत यंग नज़र आती हैं, तो उम्र की तो बिल्कुल आप बात नहीं करें। और जो तजर्बा है टीचिंग का, वो तजर्बा कभी भी रायगा नहीं जाता। वो एक्सपीरियंस बिल्कुल हमेशा सही, साथ रहता है, उस पर हम बात कर सकते हैं। और हमेशा बिल्कुल, टीचर्स जो हैं, वो कहते हैं ना कि द मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस। तो हमेशा ऑफ कोर्स। टीचिंग और एक्सपीरियंस साथ-साथ रहता है, और यही हम लोगों को, हम टीचर्स को जवान रखता है, बिल्कुल, और मुझे लगता इसीलिए है कि अगर टीचिंग जब आप बड़ा। छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं ना, लाइक 2 टू 6 इयर्स के बच्चों के साथ, तो वो चीज़ आपको हमेशा यंग रखती है। बड़ों को पढ़ाने से लगता है जैसे जल्दी से जी, बड़े-बड़े होते जा रहे हैं। एनीवेज़, अच्छा सानिया, क्या ख़्याल है? बिल्कुल। आपको मैं कहानी सुनाऊँ? कहानी सुनेंगी आप? जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, मेरा हम टॉपिक कहानी जो है सुनेंगे वो आपसे। आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले हम स्क्रीन शेयर जी, करते हैं और फिर आप स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरा जी, तो टॉपिक भी यहाँ है यही है, हमारे स्टोरी पास आपके टेलिंग लिए पर। जी हाँ, हमारी डिटेल्स। प्रेज़ेंटेशन। जी, अच्छा, इसको अगर आप उस पे ले लेती हैं स्लाइड पे तो एनीवेज़, वेल, तो स्टोरी टेलिंग, यस, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। और कहानी सुनाना बच्चों को मुझे लगता है कि इट्स अ नेवर एंडिंग एक्सपीरियंस। एवरी डे व्हेन यू टेल अ स्टोरी टू योर द यंग स्टूडेंट्स, यंग चिल्ड्रन, यू गेट अ न्यू एक्सपीरियंस। आपको एक नया तजुर्बा होता है। ठीक है, मतलब आज जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं आपको अपना कुछ कंटेंट्स बता देती हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस टॉपिक। Like first we will just see the introduction what of storytelling, कि storytelling होती क्या चीज है, and then we will see the different forms of storytelling, and then we will see the importance of storytelling. So let's start from the introduction of the storytelling. Well, storytelling was next slide if you would show this audience, the second one, third. Shall I continue? Miss Sania, shall I continue?
Well, let's see the introduction of this storytelling. Storytelling was part of everyone's childhood. अगर मैं ये कहूँ कि हम सब ने अपने बचपन में कहानियाँ सुनी हैं, अपने नानियों दादियों से, या उसके बाद फिर अपने अपने वालदैन से, स्पेशली मदर्स तो बहुत होती हैं कि करती हैं ये काम कि बेड टाइम स्टोरी ज़रूर सुनाती हैं। मुझे आज भी याद है मेरी अम्मी मुझे सुनाती थी एक बकरी की कहानी जिसके 3 बच्चे थे। तो वो कहानी वो अभी भी जनरेशन वाइज़ चल रही है। तो मेरे नीस नेफ्यू जो हैं वो उनके जो बच्चे हैं तो मैं उनको वो कहानी अभी भी सुनाती हूँ, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो येस, इट इज़ पार्ट ऑफ एवरीवन्स childhood, and it is one of the oldest, purest form of teaching, and gives you an opportunity to spend the valuable time with your young students or with your children. तो हमें इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए, चाहे घर पे भी हमारे पास पेरेंट्स को चाहिए कि जितना थोड़ा-बहुत भी टाइम है, तो बच्चों को स्टोरी बुक के साथ ले ज़रूर लेके बैठें, ज़रूर उनको इंट्रोड्यूस बिल्कुल, कराएँ, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही कहा शाइस्ता कहानी आपने। सुनना जो है अ, जी, कहानी सुनाना पहले एक ट्रेंड था जो कि इस कदर ज़रूरी चीज़ थी। बच्चे भी सुनना पसंद करते थे और बच्चों से ज़्यादा बड़े सुनाना पसंद करते थे। लेकिन आजकल के दौर एग्ज़ैक्टली। में चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बड़ों के पास टाइम नहीं है कहानी सुनाने का। तो कहानी वो खुद सुनाने के इवन बजाय वो कुछ एक गैजेट्स दे देते हैं और उसके साथ मसरूफ़ करते हैं बच्चों को। सो आज हम इफ मेरे यू ख़्याल से यही सब एक्सप्लोर करेंगे कि कितना ज़रूरी है बड़ों का भी साथ बच्चों के बैठना और कहानी सुनाना। वेल सानिया, अगर आप देखें बड़ों के पास टाइम नहीं है, इवन बच्चों के पास भी टाइम नहीं है कि वो पेशेंस के साथ बैठें, बड़ों के साथ। दे हैव बिकम वेरी राउडी एंड फिजिटी। वो उनके पास वो पेशेंस अब रह नहीं गया जो एक वक्त में हमारे पास होता था, या अब हम या हमारे मतलब हमसे बाद की एक जनरेशन के पास होता था। लेकिन आज का जो बच्चा है, दे डोंट हैव दैट पेशेंस टू सिट एंड लिसन। लिसनिंग स्किल्स जो है ना बच्चे के, वो खत्म हो गए हैं। नाउ द बच्चाज आर मोर ऑन टू द फिंगर्स ऑन द टैब्स, कि वो बस क्लिक करते जाएं और फिर आगे देखते चले जाएं। Anyways, let's continue with the बिल्कुल। introduction of this story. In early childhood education, I think storytelling is not only an effective way of engaging and grasping the attention of our children, but it also has many, many developmental benefits. कि इसके मतलब स्टोरी टेलिंग तो सिर्फ ये नहीं कि आपने बुक उठाई और पढ़ लिया, पढ़ा दिया, सिर्फ सुना दिया बच्चे को, लेकिन इस मतलब the way, I mean, when I was teaching, I used to before home time, 15 or half an hour, I used to tell my children, okay, come on, let's sit together, sit in a circle and listen to a story. And they rushed like anything, and they said used to sit quietly, pin drop silence in the class. और सारे लोग, इस बच्चे जो थे वो इस इतने अटेंशन के साथ वो सुनते थे। और इट डिपेंड्स ऑन द नरेटर एज वेल, कि जो स्टोरी सुनाने वाला है वो कितना इम्प्रेशंस के साथ स्टोरी को सुना रहा है, उसका खुद का इंटरेस्ट कितना है। व्हेन यू टेक इंटरेस्ट इन द स्टोरी with annotation and all, with your facial expressions, it will give more enjoyment to the children. अदरवाइज अगर आप सीधे सीधे पढ़ते जाएं और पेज पलटते जाएं तो वो बच्चे को इंटरेस्ट इतना उसमें नहीं रहता। सो इसी तरह से जब व्हेन आई से दैट इट हैज मेनी डेवलपमेंटल बेनिफिट्स, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो हमारी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं बच्चे की। दूसरा ये कि डेवलप्स द कंसंट्रेशन लेवल ऑफ द चाइल्ड, यू नो, एंड आगे चल के हम और भी देखेंगे कि इसके क्या और इसके अंदर है शामिल। नेक्स्ट प्लीज। Okay, let's see different forms of storytelling. You know, usually when a teacher, or when you ask somebody, okay, today I want you to read a story to the children. What usually people do, they go to the library and pick or choose one story book from there, and let the children sit in a circle और वो read करना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि story telling is always related to a story book. No, इट इज नॉट लाइक दैट। आप कहानी सिर्फ
किताबों से ही नहीं सुना सकते, बहुत सारे दूसरे तरीके भी होते हैं, यू कैन टेल द स्टोरी. एंड व्हाट आर दे, लेट्स सी. No, it is not about always reading a storybook, or it is not only the only form of story reading. You can incorporate many other aspects, many other techniques, like nursery rhymes and songs. आप कोई सा nursery rhyme और song उठा लें, उसके ऊपर story बना लें. And then picture books without any text, you can tell a story with the pictures. And then you have cultural stories, and then you have fables. You can tell the story from the fables as well. And then you have personal and emotion, your own personal stories or personal experiences, or you can ask the child to tell a story about his experiences, you know. तो स्टोरी टेलिंग जो है वो हम आज ये भी देखेंगे कि स्टोरी टेलिंग जो है वो सिर्फ हम किताबों से ही नहीं सुनाते, बल्कि उसके बहुत सारे दूसरे तरीके भी हैं जो हमें चाहिए. बीइंग अ टीचर, वी शुड इनकॉर्पोरेट इन आवर क्लासरूम, राइट? So let's see one by one what are how we can incorporate nursery rhymes and songs, uh, and how we can tell the story with the nursery rhymes and songs. So let's see. This is the nursery rhyme. Humpty Dumpty sat on a wall. वो हमारे बचपन से ये चली आ रही है और उतनी ही इंटरेस्टिंग है. You know what you can do? You just take an empty shell of egg, draw the eyes and nose and cute face, and tell this start singing this song. पहले एक दफा आप उसको विदाउट म्यूजिक और विदाउट एनी ट्यून उसको पढ़ें, उसको रीड करें, उसके बाद उसको म्यूजिक के साथ करें, एंड देन टेल द स्टोरी टू द चिल्ड्रन. इट इज सो इंटरेस्टिंग कि बच्चे भी हैरान होते हैं. एंड देन एट द एंड यू कैन ब्रेक द एग, लेट इट fall on the floor, वो गिर जाए, वो टूट जाए. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty together again. So why they could not put the Humpty together again? Because it was all broken. तो वो तोड़ के भी दिखा सकते हैं बच्चों को. बच्चों से भी फिर नेक्स्ट डे वो कह सकते हैं कि you bring an eggshell and we'll make a Humpty Dumpty. So it is very interesting to do the story with the nursery rhymes and songs. And there are so many rhymes and songs which you can turn into interesting story. So, and then we have picture books. Yeah. Take a picture card without any text on that picture card, just name of the story, and then discuss the title page with the child. कि टाइटल पेज पे क्या देख रहा है वो बच्चा. फॉरेस्ट है, ओके, पायरेट भी है, एंड देन व्हाट एल्स ही कैन they can see on the picture book. And then you can ask the child, okay, what do you think, what is inside this storybook? इसके अंदर और क्या है? Let's open the book and start telling the story only with the pictures. Next time you can give those cards to the child, to any other child, and ask him or her to tell you a story. And then we have picture book. So we can you can tell the story with the different picture books without any text on it. Yes. uh, I'm so sorry, I was disconnected due to internet issue. okay, I was telling about the picture book. Anyway, I'll repeat this thing. Like I was telling that we can tell the story to the children with the picture cards or picture books without any text on it. You just Next, okay. are you through now? Yes. And then you can first discuss the title page of the story.
picture and let the child look at the pictures and discuss the title page. Tell the child who's the author of or the writer of the story. What is an author? What is a writer? Yes, the person who writes the story is an author, and the writer are the same person. Illustrator is the person who draws the picture for you. And then they ask questions like, can I be an author? Can I be a writer? Yes, of course. When you start writing your stories, then you can become an author. So other way of storytelling is culture stories. आजकल हम बच्चों को मुझे नहीं लगता कि हम कल्चरल स्टोरीज बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं. Bachas do celebrate Eid ul-Fitr and they do celebrate Eid ul-Adha, but why? तो हमें ये why or not whole Pakistan is celebrating Eid ul-Adha, why some people are not celebrating Eid ul-Fitr, तो हमें बच्चों को बताना चाहिए कि देखो we have different cultures, different religions in the country. So there different people are belonging to different religion. So we Muslims celebrate Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha, but some people goes to church and they celebrate Christmas. And those who are from Hinduism, they go to Mandir and they celebrate Diwali. And some people celebrate Nowruz. So there is no harm in telling the children. They understand with this, they understand the social values, their culture. कि culture क्या है, and we should respect others as well. The same way we respect ourselves. तो हमें दूसरे लोगों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ये सारी चीजें जो है वो स्टोरी टेलिंग से ही बिल्ड हो सकती हैं. जब आप बच्चों को कल्चरल वैल्यूज और कल्चरल स्टोरीज उनमें उनको सुनाएंगे, उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे बच्चों को, राइट? Why we celebrate Eid ul-Adha? Okay, we celebrate Eid ul-Adha. We sacrifice a goat or camel. Some people sacrifice cows. And why we celebrate? Why we sacrifice? So आप इसको डिस्कस करते जाएंगे. वैसे वैसे उनको इस्लाम की वैल्यूज भी पता चलती हैं, इस्लामिक स्टोरीज भी पता चलती हैं. ईद उल फितर, okay, we celebrate this Eid after Ramadan, you know. And we Yes, should very take care right. of Well poor said. people as well. हाँ, people is Eid ul Fitr होती है उस या Eid ul Adha होती है, and we should take care of other poor people also. Like we have drivers and we have gardeners and maids and all. तो हमें उनकी केयर भी करनी चाहिए. सेलिब्रेट उनके साथ भी सेलिब्रेट करें, उनको भी नए कपड़े, उनको भी खाने, इस टाइप की चीजें बच्चों के अंदर फिर जब ये जी, सारी चीजें डेवलप होंगी, then they would start taking care of their environment, of other very people. right. उनमें ये सेंस Shall we? का होना जरूरी है. Now next जी, is जी, fables. Okay, Lion and the Mouse, very popular, very more famous story, Lion and the Mouse. Through fables, we can incorporate the virtues. कि भाई never think or never underestimate other other people. So we should help others as well. Either he is strong or weak, we should respect. And then स्टोरी टेलिंग पपेट्स विद द पपेट्स. ओके, बच्चों के स्कूल में हमारे क्लासेस के अंदर तो बहुत सारे स्टफ एनिमल्स होते हैं. समटाइम्स वी डू शो एंड टेल सेशन. So when the children bring stuffed toys, tell them to tell a story with the puppet, and they love to listen the story with the puppets, and they feel that, you know, softness and hardness. So that gives another kind of experience. This is another way to tell the story with the puppets. And yes, then very we right. have child's personal experiences. Acha, child's personal experiences is like, what about your first day of school? How did it go? Or talk about the play date. You went to a friend's place. तो बताओ भाई क्या किया वहां जाके? What activities did you do over there? What about your first day of swimming? You took the swimming class. So how did it go? आपको कैसा लगा? Or a picnic. Let them talk in front of the whole class. That thing develop their public speaking skills and give them a confidence, you know.
सो उनको जब अपने वो पर्सनल, व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, दैट विल ब्रिंग देम इन like confidence, public speaking skills, and something like critical thinking as well. So बिल्कुल सही। now come to the importance why storytelling is so important. We think that storytelling, okay, चलो सुना देंगे, कौन आज नहीं सुनाया कल सुना देंगे, आज टाइम नहीं मिला। और स्टोरी टेलिंग, कोई उसको बुक दे दिया लाके कि खुद से पढ़े बैठ के, चाहे उसको ना आती हो। लेकिन ये कि बच्चे के लिए, इस चीज को, बड़ों के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि what part the storytelling plays in child's life. So, storytelling is that, yes, instills virtues in them as they grow old. उनको values पता चलती हैं, and it builds like wisdom, honesty, kindness, compassion, or there are many more virtues which only develop when you tell them story about those virtues. बहुत सारे हमारे virtues हैं, हम उसकी stories बना के बच्चों को सुना सकते हैं। बिल्कुल। और हम एक और भी तो चीज़ ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स सपोज़ बच्चा कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी हैबिट है या कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस उसकी हैं जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम थ्रू स्टोरी, लाइक डायरेक्टली उनको Good. मना करने के बजाय स्टोरी के थ्रू Exactly. एक वो डिफरेंस बता सकते हैं कि व्हाट टू डू Very एंड व्हाट true. नॉट टू। तो ये Yes. भी Do's एक and don'ts, of एलिमेंट है। course. हाँ, इवन क्लास के अंदर मिसबिहेवियर्स जो होते, हम उसके बारे में भी स्टोरी बना के, ऐसे स्टोरी कोई भी बना के अपना सुना दे बच्चों को, और वो बता दे उनको। बिल्कुल सही कहा आपने सानिया, कि हम इस तरह से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। बिल्कुल। या ये बच्चे क्लास से चीजें पिक करके ले जाते हैं, शार्पनर्स एंड पेंसिल्स, इट गिव्स देम सम काइंड ऑफ एग्ज़ैक्टली। सेटिस्फैक्शन। तो उसको भी हम बता सकते हैं ना, उसको भी हम कोई बता स्टोरी बना सकते के उसके ऊपर हम बता सकते हैं कि ये हैं। गलत बिल्कुल। बात होती है, इसको हम इस तक किसी की चीज नहीं उठाते इस तरह। बिल्कुल। और फिर ये ह्यूमन नेचर में से भी तो है कि कुछ बच्चों की नेचर होती है जिस चीज़ से रोकना है या मना करना है डायरेक्टली, वो वही चीज़ बहुत रिपिटेटिवली कर रहे होते हैं। सो रिपीटेटिवली। स्टोरी कैन हेल्प अस इन इन दिस, कि वो स्टोरी से ही थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस होके, क्योंकि ब्रेन तो अपना वर्क कर रहा होता है, तो उनके बिल्कुल। सबकॉन्शियस को एक मैसेज चला जाता है कि दिस इज़ रॉन्ग व्हाट वी आर डूइंग। यानी उनको डायरेक्टली मना करने के बजाय थ्रू स्टोरी इनडायरेक्टली उनको ट्रैक बता दिया एग्जैक्टली। जाए कि व्हाट इज़ ट्रू। राइट एंड रॉन्ग। ट्रू। जी। ट्रू। इंस्टेड हाँ, हमको कहा जाए कि भाई तुमने गलत किया है, इसको आप स्टोरी के जरिए समझा दो। बच्चे बहुत समझदार हैं आज के, फौरन पिक समझदार है। करते हैं। बिल्कुल। ओके। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, स्टोरी टेलिंग से होता क्या है, लेट्स सी, इट बूस्ट देयर लिसनिंग स्किल्स। खामोशी से, क्वाइटली बैठ के चुप से सुनना किसी को, इट बिल्ड्स लिसनिंग स्किल्स थ्रू पेशेंस के, वेट एंड इट्स लिसन। खामोशी से सुना जाए, लेकिन जब खामोशी स्टोरी से सुना इंटरेस्टिंग जाए। होगी तो डेफिनेटली बच्चा सुनेगा। Definitely, of course. And then fosters their imagination, and that imagination builds their logical and critical thinking. And that राइट। logical and critical thinking make them ready for their creative writing. And listening to stories build their vocabulary as well. जब बच्चा की वेरी गुड। वोकैबुलरी नहीं होगी लैंग्वेज की, तो वो कैसे, हाउ इज ही गोइंग टू राइट अ स्टोरी, राइट, डू अ क्रिएटिव राइटिंग, राइट एन एसे? सो इट बिल्ड्स देयर वोकैबुलरी बैंक एज वेल। लैंग्वेज भी डेवलप हो रही होती है हमारे स्टोरी टेलिंग सेशन से। So it जी is very बिल्कुल। important to tell the story. And it increases cultural understanding, जैसे कि हमने अभी बताया कि ये डिफरेंट फेस्टिवल्स पे बात हो सकती है, एंड देन इट enhances their communication skills as well. कि of course, today you are telling a story, tomorrow you can ask any other child to tell the story, although he will start with that tutti putti English, broken language के साथ वो बात है, but it's okay. And the good thing about it is that the nobody criticize each anyone, कि कोई भी अगर कोई कहीं पे गलती कर रहा होता है तो वो पिक ही नहीं कर रहा होता, ना वो बता रहा होता है कि इन्होंने ये गलत बोला है। ईच वन टीचर्स वन, वो उसको सुन रहा होता है, और उनके इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को सुनते हैं जब, कि किस तरह से बात की जाए, हाउ टू टॉक, बिल्कुल। एंड हाउ टू बिल्ड द सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्टली। जब करेक्ट सेंटेंस से बोल रहे होते हैं तो उनको वो भी पता चलता है कि अच्छा, इसको, इस सेंटेंस को हमें इस तरह बोलना है।
makes learning interesting and easier, and then it improves social skills. Of course, everybody is sitting together and listening together, and then they are waiting to take their turns. When your turns will come, then only you can speak, you know. और एक दूसरे की केयर करना कि सब लोग आराम से बैठे हैं, सब सुन रहे हैं. So it builds their social skills as well. Very So right. this is it. Thank you. Any questions? Thank you very much, Shaista. You're welcome. बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. इट्स लव टू हैव यू हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. बहुत ही अच्छा लगा, Thank बहुत मज़ा आया. इंशाल्लाह ताला फिर भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम शेयरिंग ज़रूर Inshallah, करेंगे I एक would साथ. love to do that. And thank you, Miss Sanya, for giving me this chance on this Train the Digital Trainer platform. And I really माय loved प्लेजर. it. I loved माय it. प्लेजर. Thank you very थैंक यू much. वेरी मच. Thank ओके, you. अल्लाह हाफिज़ टू एवरी